Hi, welcome to the class of macroeconomics. So today we are going to start with Keynesian theory of income determination. We have already started with unit 4 and we have completed aggregate demand and aggregate supply curve. So this chapter is basically a repeat telecast of what you have studied in the previous class, AS and AD curve. Plus we'll get to learn about other things as well. So please pay attention. It's a very important topic to cover and understand from both your understanding point of view and examination point of view. So let's begin. So basically, Keynes has talked about three main points. What are these three main points? First one is the level of employment is directly related to the level of production or output. The second point is in market economy, planned spending or business output will determine the level of production. Business adjusts the level of production and accommodate demand for their products. So simply, supply adjusts to demand. Contrast to this statement with says law, which says supply creates its own demand. And third point is since employment depends on production and production responds to spending, the level of employment in a market economy depends on the level of planned spending in the economy. So now, अब हम क्या करेंगे? We'll understand these points individually. What did Keynes try to say in his concept? So first point is कि उन्होंने कहा था the level of employment is directly related to the level of production or output. See, you already know that if employment is high, production will be high. Why? Because production के लिए you need men, you need labor. So these labor will help you produce the goods and commodities that you require. And how will you get these laborers in your company? You will give them employment. So production के लिए there will be an increase in employment, and when employment increases, production increases, GDP increases. So that is why the level of employment is directly related to the level of production or output. Both goes together. अगर एक ऊपर जा रहा है, एक राइज हो रहा है, तो दूसरा भी राइज होगा, एक अगर गिर रहा है तो दूसरा भी गिरेगा. If there is a fall in output production, then there will definitely be a fall in there will be a fall in employment level and rise in unemployment level. Second point is in market economy, planned spending of business output will determine the level of production. What, like you are a consumer, right? Now what a consumer does? A consumer demands. So when you are demanding, you are spending. So when you are spending, the production will increase. How will the production increase? You are spending, you are demanding a commodity. Now the producers, it's the producer's responsibility to make it available. How will they make it available? By producing. So obviously production increases. आपका planned spending increase हो रहा है, so production is also increasing. So this is what this point is talking about. Here, put simply, supply adjusts to demand. So according to your demand, the supply takes place. This is what Keynes has said in his concept, in his theory. Whereas says ने क्या कहा था कि supply creates its own demand. इसका ये मतलब है कि irrespective of the demand, you supply the goods. आप जब supply करोगे तो you will automatically get customers for your goods or services. तो ये कहना था says का. But Keynes on the contrary said कि ऐसा कुछ नहीं है. We need to demand. Supply demand पे निर्भर करता है. If you are demanding, अगर आप demand करोगे तो production automatically होगा. So but Keynes की जो बात थी वो सही थी, लेकिन ये short run में ही सही होती है, and says की जो बात है वो long run में सही होती है. So basically none of them are wrong.
It just depends upon short term and long term basis. So now, since employment depends on production and production responds to spending, the level of employment in a market economy depends on the level of planned spending in the economy. So Keynes ने कहा है कि क्योंकि employment depends on spending, क्योंकि आप जो spend करते हो तो आप आपकी डिमांड बढ़ती है. तो आप डिमांड करते हो किसी गुड्स या सर्विस की, तो ऑब्वियसली उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनीज विल रिक्वायर व्हाट, इट विल रिक्वायर टू हायर मोर पीपल. वो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा. जब एम्प्लॉयमेंट को लोगों को देता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है एंड डेफिनेटली एवरीबडी, not everybody but yeah, people in your economy gets employed. So generation hota hai employment ka. So this is why planned spending, which is your demand, is very much required for employment in the economy. And ये जो points थे ये बहुत important है समझने के लिए, क्योंकि जब आप अगर आप ये समझ जाओगे तो आप कीन्स की थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम को आराम से समझ जाओगे. Because see, what is national income? National income is directly related to your GDP, gross domestic product. जो आप प्रोड्यूस करते हो उसी की तो डिमांड आती है ना. एंड व्हेन पीपल आर डिमांडिंग इट, दे आर रेडी टू स्पेंड सम मनी फॉर इट. तो जो पैसे वो अपने उस डिमांड के लिए दे रहे हैं, वही तो एक कंट्री की नेशनल इनकम हुई. So that is why we are studying this chapter, these concepts we are studying, aggregate demand, aggregate supply, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमारा नेशनल इनकम कैसे जनरेट होता है. Now, aggregate demand in Keynesian analysis. The Keynesian perspective focuses on aggregate demand. Keynesian का जो perspective है वो कहाँ focus करता है? Aggregate demand पे focus करता है. Whereas Sez जो कहते थे, Sez की जो perspective थी, it was basically more on aggregate supply. Because what he said the supply will create its own demand, whereas Keynes said the demand creates its own supply. Something like that. So yeah, Keynesian perspective focuses on aggregate demand. The idea is simple. Firms produce only if they expect it to sell. Thus, while the availability of factors of production, determination of national potential GDP, the amount of goods and services that actually sell, known as the real GDP, depends on how much demand exists across the economy. So Keynes ने क्या कहा था that it is the aggregate demand on which supply of goods depends. अगर आप demand करोगे तो firms produce करेगी, otherwise firms will not produce any goods or services. Why? Because see, if firms are producing more than what is being demanded, what is there in demand, so obviously वो उसे loss होगी, which no firms want to undergo. तो इसलिए firms बस उतना ही produce करेंगे जितना आप demand करोगे. So if you are demanding, the firms are producing. If you're not demanding, the firms won't produce. And this is what this aggregate demand in Keynesian analysis is talking about. So here you can see a graph. Basically it is talking about short run. इसमें आप देख रहे हो कि price level है, real GDP है, and demand है. You can see supply curve as well. ये potential GDP supply curve, not supply curve. Basically ये है आपका potential GDP, which is equivalent to your supply curve. So you are seeing that there is a fall in aggregate demand in this particular graph. You can see that कि aggregate demand गिर रहा है, 80 से 81 जा रहा है, that is leftward movement हो रही है. And price is still the same. Price में कोई change नहीं है. Why is price not changing? Price is not changing because aggregate demand कम हो रहा है, but supply तो उतना ही है ना, इसलिए price में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. So here, what you're going to know is
The Keynesian view of ADAS model uses an SRAS curve, that is short-run aggregate supply curve, which is horizontal at levels of output, below potential and vertical at potential output. तो जब पोटेंशियल आउटपुट पहुंचता है तो वो वर्टिकल लाइन हो जाता है, बिलो पोटेंशियल it is horizontal. So when beginning from potential output, any decrease in aggregate demand affects only output. So thus when beginning from potential output, any decrease in aggregate demand affects only output but not prices. Any decrease in aggregate demand affects only prices, any increase in aggregate demand affects only prices, not output. तो आप जैसे यहाँ देख रहे हो इन दिस प्रीवियस चार्ट कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एग्रीगेट डिमांड का, इसीलिए सिर्फ आउटपुट पे फर्क पड़ा, दैट इज YP से Y1 हुआ है, बट प्राइस लेवल इज स्टिल द सेम, प्राइस लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ा है एंड सप्लाई भी कोई चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आप देखो कि प्राइस इज स्टिल द सेम, बस आउटपुट हैज डिक्रीज्ड. Keynes argued that for reasons we explained shortly, aggregate demand is not stable. Aggregate demand stable नहीं होता है. That it can change unexpectedly. Aggregate demand कैसे change होता है? Unexpectedly change होता है. Suppose the economy starts when AD intersects SRAS at PO and YP. Because YP is potential output, the economy is at full employment. तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि YP is the potential output. Why because it is vertical line. Vertical line है मतलब employment is full. सबके पास employment है. There is natural rate of unemployment in the economy. That's it. Otherwise, every person is employed. So the goods are being produced to the best maximum capacity जो एक economy produce कर सकती है, जितनी कर सकती है उतने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अच्छे खासे लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है. तो ये आपका जो लाइन है SRAS कर्व यहाँ वाला, इट इज डिपिक्टिंग योर पोटेंशियल GDP. So suppose the economy starts when AD intersects SRAS at PO and YP, that is on your potential GDP. Because YP is potential output, the economy is at full employment. समझा आपने कैसे हुआ full employment? Because AD is volatile, it can easily fall. So demand is volatile. Demand depends upon market situation, आपकी earning, income, a lot of factors. So these demand is very volatile. People can change their taste, preference, anything, anytime. So that is why we are calling it volatile. Thus, even if we start at YP, अगर हम YP पे शुरू करते हैं, if AD falls, then we find ourselves in what Keynes termed a recessionary gap. That is, हमारा जो डिमांड है वो गिर जाता है एंड वो जो बीच का गैप होता है उसे हम कहते हैं recessionary gap. The economy is in equilibrium but with less than full employment. That is, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तो है, यू आर कटिंग द सप्लाई कर्व, तो इक्विलिब्रियम तो मिल ही जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फुल, एम्प्लॉयमेंट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट. As Y1 in figure 12.3 shows, Keynes believed that the economy would tend to stay in recessionary gap with its attendant unemployment for a significant period of time. तो जब ये जो गैप आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग कहेंगे रिसेशनरी गैप. एंड कीन्स बिलीव्ड कि ये जो रिसेशनरी गैप होता है, इट इज गोइंग टू स्टे इन द इकोनॉमी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इट्स नॉट गोइंग टू जस्ट गो लाइक दिस. अब ये क्यों है, इसका भी रीजन में पता चलेगा. So in the same way, although we do not show in the figure, if AD increases, the economy would experience an inflationary gap. तो जब AD increase होता है तो इकोनॉमी में क्या आता है, inflationary gap आता है, where demand is attempting to push the economy past potential output. Where demand is attempting to push the economy past potential output. यानी कि जो आप potential output
जो आपका है प्रोडक्शन है उसको भी क्रॉस कर देगा डिमांड, इसलिए क्या आ जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस विल राइज, सो व्हेन यू डिमांडिंग मोर देन व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, definitely the prices of goods and commodities will rise. Consequently, the economy experiences inflation. The key implication of either situation is that the government needs to step in and close the gap, increasing the spending during recession and decreasing the spending during booms to return aggregate demand to the match potential output to match the potential output. See, तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है, जब रिसेशन आता है या फिर रिसेशनरी गैप आ जाता है या इन्फ्लेशनरी गैप आता है, तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कैसे करती है? बाय फिस्कल मेजर्स। यहाँ पे इट कैन आइदर इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग और डिक्रीज इट्स स्पेंडिंग। इन्फ्लेशन में क्या कहेगी, अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशनरी गैप आ गया है, तो व्हाट विल द गवर्नमेंट डू? द गवर्नमेंट विल डिक्रीज इट्स स्पेंडिंग, ओके, ताकि ताकि इकोनॉमी में ज्यादा सॉरी इकोनॉमी में फ्लो ना हो मनी का, एंड पीपल के, लोगों के हाथ में पैसे ना हो कि वो और खर्च करे और डिमांड करे और प्राइसेस को रेज करे। और अगर रिसेशन है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट पैसे दे डालती है इकोनॉमी में। कैसे पैसे डालती है? टैक्सेस कट कर देगी, कम टैक्सेस आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, बॉन्ड्स बेचने लगेगी, सॉरी it will start, it will start giving back the bonds. If you have taken bonds from the government, it will start to sell it off. आपको कॉल करेगी वो अपने बॉन्ड्स को, और उसके बदले आपको आपको जो पैसे गवर्नमेंट को दिए थे वो आपको पैसे दे देगी, एंड विद इंटरेस्ट रेट, सो दैट यू कैन आराम से डिमांड। ये सारे स्टेप्स है जो गवर्नमेंट देती है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। ये हो गया। Recall the aggregate supply and demand model, that aggregate demand is total spending economy-wide on domestic goods and services. Aggregate demand is actually what economists call total planned expenditure. The aggregate demand क्या है? Total planned expenditure. You may also remember that aggregate demand is the sum of 4 components. So I hope you remember what are the 4 components of aggregate demand. First one is consumption, second one is investment, third one is government spending, and fourth one is net export, that is X minus M. M क्या है? M is import. तो ये आपकी 4 components है aggregate demand के. In the following section, we will examine each component through Keynesian perspective. So what determines consumption expenditure? आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, आप जो खर्च करते हो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, वो कैसे डिटरमाइन होता है? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट राइट नाउ। द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज स्पेंडिंग बाय हाउसहोल्ड एंड इंडिविजुअल ऑन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? इट इज स्पेंडिंग ऑन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. ड्यूरेबल गुड्स आर items that last and provide value over time, such as automobiles. Automobiles क्या है? Durable goods है, that is it lasts and provide value over time. Non-durable goods are things like groceries. Once you consume them, they are gone. That is not durable. ठीक है, आप आराम से वो कंज्यूम करते हैं, वो चला जाता है, खत्म हो जाता है. Recall from the back. Okay. So yeah, Keynes identified 3 factors that affect consumption. So basically, Keynes ने क्या कहा कि there are 3 factors जिसपे हमारा consumption depend करता है. We'll study the 3 factors right now. So the first one is disposable income. For most people, the single most important powerful determinant of how much they consume is how much income they have in their take-home pay, also known as disposable income, which is income after taxes. So basically, disposable income वो पैसे होते हैं जो आप खर्च कर सकते हो, and this is the money which is
which you have after you have paid your taxes. Fine. So ये एक बहुत important factor है consumption के लिए. Definitely अगर आपके पास पैसे होंगे ज़्यादा तो आप अच्छे से खर्च करोगे, अच्छे से डिमांड करोगे. अगर आपके इनकम कम है तो definitely your demand will also be less. So this is one important factor for your consumption, to determine your consumption. Second one is expected future income. So ये आपको पता है क्या होना चाहिए. You expect कि future में you will get this much amount from any investment, या your salary is going to increase, या you are going to receive some property from somewhere. तो जब आपको ये पता होता है ना तो आप एक टेंशन फ्री माइंड से कंजम्पशन करते हो. You consume things that you want because you know that in future you will get use some of money, so you can आराम से pay your bill. तो ये होता है expected future income के ऊपर. If you know कि future में आपका income घटने वाला है तो आप खर्च नहीं करोगे. But if you know कि अगर future में income बढ़ेगा, then you will definitely take things that you may not require at present, but because you know that you are going to have some money, you are going to increase your income, you can take that. You can definitely demand those goods. And the third point, wealth or credit. When households experience a rise in wealth, they may be willing to consume higher share of their income and to save less. So see, जब households को लगता है कि just like future expectation of rise in income या foreign income, ये wealth और credit भी same है. अगर household को लगता है कि उनका जो wealth है it's going to increase, they may be willing to consume a higher share of their income and to save less. So what they do is they spend more and they save less. So when they are spending more, they are increasing the demand. Consumption is increasing. Okay? So finally, Keynes noted that the variety of other factors combine to determine how much people save and spend. If households preference about saving shift in a way that encourages consumption rather than saving, the AD will shift out to the right. So अगर आपका consumption is increasing, so you know your demand curve will shift in which direction? Right. Okay. And अगर आपका savings ज़्यादा है and spending कम है, तो क्या होगा? आपका जो demand curve है वो leftward shift होगा. So what determines investment expenditure? तो ये था आपका consumption का determination कि आपका जो consumption है वो किन बातों पर determine करता है according to Keynes. Now the next point is what determines your investment expenditure. आपकी जो investment है वो किन बातों पे depend करती है? We are going to see that right now. So we call spending on new capital goods investment expenditure. ठीक है? जब आप कैपिटल गुड्स में स्पेंड कर रहे हो पैसों को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए कहते हैं बिकॉज़ उसमें आपको एक रिटर्न आती है. ठीक है? सो इन्वेस्टमेंट फॉल्स इनटू 4 कैटेगरीज. इन्वेस्टमेंट की 4 कैटेगरीज होते हैं व्हिच आर प्रोड्यूसर ड्यूरेबल इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, चेंजेस इन इन्वेंटरीज एंड रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर. ये थे आपके 4 पॉइंट्स. एक है प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, जो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होता है वो सब. देन नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर where you don't live. Okay, like factories, offices, retail locations, ये है आपके नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स. चेंजेस इन इन्वेंटरीज, जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, इन्वेंटरी यू रिक्वायर. So if you're spending on it, that is also your capital expenditure. And residential structure, this is your personal expenditure, that is when you're buying some flat house building, तो ये होता है आपका एक capital expenditure. ठीक है? Such as single family homes, townhouses and apartment buildings. So moving on, business conduct the first 3 types of investment. Definitely जो first 3 investment है वो business करेगी, and जो last वाली investment है वो आप करोगे. Consumers करते हैं, households करते हैं. So consumers basically सभी होते हैं. So yeah, the last investment is done by household and the first 3 by the business houses. Keynes treatment of
investment focus on the key role of expectations about future in influencing business decisions. When business decides to make an investment in physical assets like plants or equipments, or in intangible assets like skills or research and development project, that firm considers both expected investment benefits and investment costs. So when a business is doing investment, capital investment, तो capital investment देखो बहुत types के होते हैं. Research and development में अगर आप invest कर रहे हो, so that is also your capital investment. You should and remember this thing, okay? So when you're investing, you have certain points in mind. आपको सोच के invest करते हो. पहला तो आपको बेनिफिट चाहिए होता है, एंड दूसरा ये होता है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी इंकर करना पड़ता है. सो इट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स. The clearest driver of investment benefit is expectation of future profit. When we expect an economy to grow, business perceive a growing market for their products. Their higher degree of business confidence will encourage new investment. तो जब बिजनेस को लगता है कि फ्यूचर में मार्केट बहुत अच्छी ग्रो करने वाली है, उसके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड होगी, तो वो इन्वेस्ट करती है. Why are they investing? Because they think that if they invest, they will definitely get good returns, and that is what is the goal of any business, to earn profit, to get good returns on their investment. Okay. And now the second thing, interest rate. It plays a significant role in determining how much investment a firm will make. Just as individuals need to borrow money to purchase homes, so business need to finance when they are purchasing big ticket items. The cost of investment thus includes the interest rate. Even if the firm has the funds, the interest rate measures the opportunity cost of purchasing business capital. So what is interest rate? अगर बैंक कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देगी, तो डेफिनेटली आप उससे लोन लोगे एंड यू विल टेक दैट, यूज दैट लोन फॉर योर स्पेंडिंग, राइट? आप लोन लेके अपने पास रखते नहीं हो, आप उसको स्पेंड करते हो. वैसे बिजनेस हाउसेस जो होते हैं वो लोन लेती है बैंक से टू स्पेंड ऑन देयर, टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट इन देयर बिजनेस. ऐसा नहीं है they don't have money, they definitely have a lot of capital at their disposal, but problem ये होता है कि वो उस capital को rather than using it for expansion purpose, वो अपने capital को किसी और काम के लिए रखती है एंड वो बैंक से कम इंटरेस्ट रेट में लोन लेके अपना एक्सपेंशनरी काम करती है. इससे वो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? यू शुड नो, इफ यू डोंट नो गो चेक इट आउट. ओके, आप उसका गूगल करो, उसको मतलब समझो, और फिर भी ना आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, देन आई आंसर. अदरवाइज अभी अपने से एफर्ट डालो कि क्या होता है. मेनी फैक्टर्स कैन अफेक्ट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. और इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल, इफ द एनर्जी प्राइसेस डिक्लाइन, then investment that use energy as an input will yield higher profit. Definitely अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी और आप अगर वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा. और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है टू अर्न प्रॉफिट. If government offers special incentives for investment, for example through tax code, then investment will look more attractive. Conversely, if government removes special incentives from tax code or increase other business taxes, then investment will not look attractive. So basically government आपका investment है कैसे influence कर सकता है? It can tell you that अगर आप इस particular commodity पे invest करोगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका टैक्स वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. तो आप क्या करोगे? टैक्स बचाने के लिए आप जाके वहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे, उस पर्टिकुलर कमोडिटी, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे in order to save your tax, which will indirectly increase your investment, a country's investment, which is a good thing for any country, right?
तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो। सो व्हाट डिटरमाइंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब हम जानेंगे कि आफ्टर इन्वेस्टमेंट जो स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट की वो कैसे होती है, वो किस बात पे निर्भर करती है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज फेडरल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली वी टॉक इट वी आर गोइंग टू टॉक फ्रॉम America's point of view. Although we usually view the United States as the market economy, the government still plays a significant role in the economy. Government provides important public services such as national defense, transportation infrastructure, and education. Keynes recognized that the government budget offered a powerful tool for influencing aggregate demand. Not only could more government spending stimulate aggregate demand, but lowering or raising tax rates could influence consumption investment spending as well. Okay, so Keynes concluded that during extreme times like deep recession, only the government had the power and resource to move aggregate demand. तो जब एक्सट्रीम टाइम्स होते हैं ना, तो गवर्नमेंट के पास ही वो पावर होती है कि वो एग्रीगेट डिमांड को किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकता है। तो बेसिकली रिसेशन में गवर्नमेंट का एम क्या होना चाहिए कि वो एग्रीगेट डिमांड को वो एक राइटवर्ड मूवमेंट दे, so that people can make demand and take that demand come into an equilibrium position where there is sufficient employment in the economy, when the demand is sufficient and people are having a better standard of life. ठीक है, तो ये कैसे करती है गवर्नमेंट ये बहुत तरीके से कर सकती है। टैक्स रेट्स को कम कर सकती है। अगर टैक्स रेट्स को बढ़ा देगी तो फिर आप स्पेंड नहीं करोगे, टैक्स रेट को कम कर देगी फिर आप ज्यादा स्पेंड करोगे, डिमांड करोगे, अदरवाइज यू वोंट डिमांड दैट मच। तो ये तो बस एक टैक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप्स लेती है इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ देयर spending and demand, aggregate demand and supply curve. Now the last point in which determines your aggregate demand. ठीक है, aggregate demand चार चीजों पे डिपेंड करती है। अब हम नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में पता करेंगे। हमने तीन बार चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है। So exports are domestically produced products that sell abroad, while imports are foreign products that consumer purchase domestically. तो आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में पता होगा, उसमें डेफिनेशन पता होगा अभी तक, आई होप। सिंस वी डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, एक्सपोर्ट को क्या कहते हैं, निर्यात, एंड इंपोर्ट को कहते हैं आयात, फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। So since we define aggregate demand as spending on domestic goods and services, export expenditures add to aggregate demand. तो क्या लिखा है कि since we define aggregate demand as spending on domestic goods and services, export expenditure add to aggregate demand, while import expenditure subtract from AD. तो जब आप import करते हो तो आप foreign products को use कर रहे हो। जब फॉरेन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो वो आपकी एग्रीगेट डिमांड में नहीं आएगा, बिकॉज आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप अपना नेशनल इनकम को कंप्यूट कर रहे हो, एंड नेशनल इनकम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंपोर्ट। इंपोर्ट बाहर देश की चीज का होता है, तो जब बाहर देश की चीज आती है आपके कंट्री में तो आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हो प्रोडक्शन में अपने कंट्री का। आपको क्या इंक्लूड करना है, आपको सिर्फ अपने एक्सपोर्ट इंक्लूड करना है, इंपोर्ट को exclude करना है। Two sets of factor can cause shifts in export and import demand: change in relative growth rates between countries and change in relative price between countries. What is happening in countries' economies that would be purchasing those exports heavily affects the level of demand for a nation's export. So, for example, if major importers of American-made products like Canada, Japan, Germany have recession. मान लीजिए कनाडा, जापान एंड जर्मनी के देशों में रिसेशन है, और ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज है अमेरिका के लिए, जो अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को ये अपने कंट्री में इंपोर्ट करते हैं। इन कंट्रीज में अब अगर रिसेशन है तो क्या ये डिमांड कर पाएंगे अमेरिका से, अमेरिकन गुड्स को इंपोर्ट कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनकी जो वैल्यू है, मनी की जो वैल्यू है वो घट गई होगी रिसेशन की वजह से। सो अमेरिकन गुड्स जो है वो इन देशों के लिए एक्सपेंसिव हो गया होगा, महंगा हो गया होगा। तो अगर ये इम्पोर्ट करते हैं तो इनको बहुत खर्चे पड़ जाएंगे, पैसे देने पड़ेंगे, तो दे विल नॉट इम्पोर्ट, दे विल ट्राई नॉट टू इम्पोर्ट अमेरिकन गुड्स, rather focus on their domestic production. Fine. Products to these countries are likely to decline. Exports of US products to these countries are likely to decline. Conversely, the amount of income in the domestic economy directly affects the quality of nation's import. More income will bring higher level of imports. So, amount of income in the domestic economy, अगर domestic economy में ज़्यादा income है, तो क्या होता है, वो जो economy है, that economy is capable enough to import goods from other countries. So basically, अगर आपकी income अच्छी है because of domestic economy is performing well, you can import goods from other countries at the same time. क्योंकि तब आपके पास पैसे होंगे कि आप import कर पाओगे. So relative price of goods in domestic and international market can also affect exports and imports. If Indian goods are relatively cheaper compared with goods made in other places, perhaps because of a group of Indian producers has mastered certain productivity breakthroughs, then Indian exports will be likely to rise. If Indian goods become relatively more expensive, perhaps because of change in exchange rate between Indian rupee and other currencies, and other currencies has pushed up the price of inputs to production in India, then exports from Indian producers are likely to decline. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपकी जो करेंसी है या फिर आपके जो प्रोड्यूसर्स है आपकी कंट्री के, लाइक इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स है, अगर उनके पास एक ऐसी टेक्निक है कि वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं काफी कम दाम में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वही सेम गुड जो बाकी के बाहर के देश है उनको काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा है, so what they will do is they will not produce that product in their country at that high rate. वो क्या करेंगे, वो इंडिया से इंपोर्ट करेंगे वो कमोडिटी को, तो यहाँ पे इंडिया को फायदा हो जाएगा. ये था पहला पॉइंट कि ये इस तरह से इंडिया को फायदा होगा अगर वो एफिशिएंटली अपने अपने कंट्री में किसी भी गुड या कमोडिटी को प्रोड्यूस करती है. और दूसरा ये होता है कि अगर आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, मान लो करेंसी, आपकी जो करेंसी की प्राइस है वो गिर जाती है या बढ़ जाती है. सो perhaps because of change in exchange rate change होता है between the Indian rupee and other currencies has pushed up the price of input. मान लो दूसरे करेंसीज के दूसरे जो कंट्रीज है वहाँ पे इनपुट प्राइसेस हैव रिजन, या फिर इंडिया की जो इनपुट प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गए हैं, तो बाहर के देश क्या करेंगे ना, वो आप इंडिया से नहीं लेंगे क्योंकि इंडिया विल सेल देम एट अ हायर प्राइस एंड दे themselves can produce it at a low price. So what will they do? They will not import from India, they will rather produce it themselves in their own country. तो ये होता है आपका, ये था हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं कि एग्रीगेट डिमांड के जो 4 फैक्टर्स है वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो कैसे इंक्रीज होते हैं, कैसे डिक्रीज होते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज पॉइंट्स that we have gone through. So I hope you revise it. आप फिर से देखो, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करके पढ़ो, अच्छे से समझो. We'll meet in the next class and then we'll continue this topic and try to understand more on it. So this was your Keynesian theory of income, and we'll continue with this topic in the next class. Thank you. If you have any doubt, you can ask, comment in the comment box, and you can ask. Otherwise, if you have my number, you can text me on WhatsApp. I'll definitely help.